Okay, good afternoon all. Hope you all are doing good. You all are practicing questions related to programming and other labs. Today we'll discuss about the basic structure of a C program. Today we'll discuss the basic structure of a C program. Yesterday we were discussing. Uh, we have discussed yesterday. We have discussed about some history of C, difference between compiler and editor, and other things. First, we'll discuss the structure of a program, C program. Then we'll move towards the variable declaration and other thing, and then we'll start some basic programs. Start writing some basic programs. Okay. ये PPT visible है proper? Yes, sir. Okay. If we talk about C program structure, so basically, as we have discussed yesterday also, a C program consists of the following part: preprocessor commands, functions, variable, statements, comments. In a broad way, we can say like this. Just consider this simple code. Here you can see hash include stdio.h. This is integer main. Then curly bracket start, curly bracket end. This is my first program in C. This is a comment. So these all will this a C program consists of these things. I'm talking about functions. This main followed by open bracket, close bracket. This everything which is written in such a way is a function. Every statement you can see printf. This one statement printf itself is a function, and so on. So the point is, in every program the following parts are there. So in broader way, if you talk about the basic structure of a C program, it consists of the following sections. These are the sections that a program includes: document section, link section, definition section, global declaration section, then this main section. In main also we have two section: declaration section, execution section, and last here you can say user defined section. So this is basically the structure of a C program. A C program consists of the following thing. Some of the sections are optional, and some of the sections are mandatory. Like like this main section is mandatory for any C program. If you are not containing user defined functions, then these parts are optional. We might not using some constants. We are not declaring global variables and all. So some of the portions are sections are compulsory, like the main section, and some of the sections are, you can say, optionals. So now we will see one by one what this section is all about, and प्रोग्राम में इनका क्या significance है और हम कैसे चीज़ों को use करते हैं. Same thing I have repeated here. So we have started from document section. Just see whatever I have section shows. Yeah, this is the simple code showing all the sections here. At the top we are having document section. One by one we'll discuss. I'm just giving you the feel that what all these sections are about. Then we have written link section. What do you have written? Link section. So this is what the link section is. Next one was what? Next one was what? Definition section. You can see definition section over here. So which one is link section? Link section is basically this preprocessor directives. Okay. Okay. I will explain everything one by one. I'm just giving you feel. Some of you already have code, so you should understand that particular section was what section. We'll discuss every section one by one. I'm just giving you the feel. This is the definition section. Hash define is the word here. Global declaration.
Then main function. It may have return type void or integer. This is basically the entry point. In the main section, here what we have written like document section, link section, then definition section, then global declaration section, then main section. This is the entry point of our program basically. Here also we have declaration and then execution and all. In previous class we have started with variable and all. I was thinking to complete that first. Now I am switching to this. Then we'll link whatever we discussing yesterday. We'll link everything with that. Okay, so this is basically the entire structure of a C program. Some of the portion are optional. I am telling you. Like I have not written anything over here. Name of the program, I'll leave blank, something like that. Not necessary. Every program will have some user defined functions. Might be this function term is not, you might not familiar with this. Function is basically a small a group of instruction which is defined to perform a certain task. So again, it's a group, just like a program, it's a set of instruction. So function is definitely set of instruction for a specific task. So a small code that perform a particular task. This will give us flexibility कि हम बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड करें, बड़े प्रोग्राम को, बड़े टास्क को स्मॉलर टास्क में डिवाइड कर लें. And each function separately will doing that. तो अब अपन वन बाय वन देखते हैं और इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं. दिस बेसिकली यू कैन से एक स्टैंडर्ड वे है एंड दैट वी मस्ट फॉलो इट. तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आप लोगों से, जब आप अब छोटे छोटे प्रोग्राम में दूंगा और वो आपको घर पे करना होंगे, ऑप्शनल है, इस पूरा प्रोग्राम ही ऑप्शनल है ये, तो इट्स नॉट लाइक एनी फोर्स, ये सिर्फ सेल्फ मोटिवेशन है. तो आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा. इवन फॉर नेमिंग कन्वेंशन ऑल्सो, नॉमेनक्लेचर ऑल्सो, यू मस्ट फॉलो दैट. सो ग्रेजुअली इट विल बिकम योर हैबिट. तो हम वन बाय वन पूरे सेक्शन देखते हैं. अब जैसे डॉक्यूमेंट सेक्शन है तो नाम से ही समझ में आ रहा है डॉक्यूमेंटेशन से. तो दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम. अगेन इट्स ऑप्शनल, पर इसमें क्या होगा बेसिकली, who developed this code, when this code is developed, a small short description about the program. And you should do this. Like अगर अभी आप है ना लैब्स अटेंड कर रहे हो और आप कोड कर रहे हो सी में, तो आपको क्या करना चाहिए. लाइक आज आपको किसी ने आपको डेटा स्ट्रक्चर में आपने क्विक सॉर्ट का प्रोग्राम बनाया, और जब आप वो प्रोग्राम लिख रहे थे तो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम your name, enrollment number, date, experiment number, short description about that, or you can say 2-3 line theory regarding that. The purpose of this document section is basically increasing the readability of the code, increasing the understandability of the developer. Or when we work as a team, it is sometimes difficult for others to understand this. So initial level you must understand कि ये program किसके बारे में है. So by reading just top lines, you can understand, okay, this program is about sorting, developed by this at that date. Even if you modify that, you must write that modification date. This you should make as a habit. It's not about only this C program. As a developer, you must document all these things. So you must know what you have to document. So for this small program, you must know, you can write the name of the program, like sorting, developed by you must write it, date you must mention it, and a small description about that. So you should do like this. So even for your practical files, even for your lab assignments, that will be helpful for you and helpful for others too. What I am saying, it will increase the readability, so that will be useful for us. And as a team, when we work, then it will be easier for them, others, to understand. Now the point is, as I discussed about the compiler interpreter in last class, so these documentation part will be skipped by the compiler. So you will write it in comment line. This double slash is basically for writing comments in the code. And what are those comments? When you write this double slash, backslash, so compiler will omit these lines. They will not read these lines, assuming that these are the comments. But that comments will increase the readability of the code. और अगर हमें एक बल्क लाइन, ये तो फॉर सिंगल लाइन कमेंट हम डबल स्लैश बैक स्लैश यूज करते हैं, अदरवाइज हम यूज करेंगे बैक स्लैश फॉलोड बाय स्टार एंड फॉर मल्टीपल लाइंस, एंड देन स्टार फॉलोड बाय बैक स्लैश एट द एंड. इन द बिगनिंग
backslash followed by star extract basically, and in the end it will be star followed by backslash. So this is all about the first thing that we have discussed about the documentation section. So again, it is optional, but again, if you write this, it will clearly say that you are following certain convention, and it is important. For a smaller code, we are not getting this. For larger code and a big program, it is required. Even comments also. Now come to the second section. That is what the second section was, what? Link section, and that is important. And what is that link section is? The link section provides instruction to the compiler to link functions from the system library, such as using the include directive. तो अगेन अभी इसी प्रोग्राम पे वापस आओ. यहाँ पे हमने लिखा है ना प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. ये जो हैश इंक्लूड है, ये बेसिकली क्या है? ये हैश जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है. अब नाम ही बता रहा है प्री प्रोसेसर मीन्स व्हाट? बिफोर प्रोसेसिंग दिस, it tells the compiler to add these files, this .h extension for header files, this stdio.h, conio.h dot extension tell that these are the header files. These are the predefined header files present in the in the C library, which include the definitions of various library functions. Just like you can see, we have used this printf. And what printf used to do? Printf is a function which is used to get the output on the screen. So these definition of this printf, you are just using it without declaring it. We are just calling it, executing these functions. All these definitions are there in these header files. So before writing using these, we require to link this with our program. So that is what the purpose of this preprocessor directive. So second, that part is link part. We linking these header files with our program. So first one was document section. Now second one was link section. So come to these header files. Anybody wants to ask anything here? No, sir. Anybody? Okay. Now, as we have discussed header files, let us discuss something more about header files. Header files basically serve two purposes. System header, there are two types. You can say header files. We can also define, we can have user-defined header files. Others be on time. Okay. What happened if you are developing a big program? So every time we have to repeat, sometimes we have to repeat the same codes again and again. So why not to write this as a function? And then if similar things is in multiple modules are there like that. So you can create a header files and attach it in other programs also. So you can say we have two types of the purpose served by header files. One is the system header files for these kind of library functions and all, like printf, scanf. These all definition are there. And for our own header files, we can have definitions of user defined functions. That is basically for for better coding. We required modular kind of approach. In bigger program, we might have to use various functions that we have developed in other programs also. For these kind of purpose will be served by header files. So you can have your own header files. We can define our own header files, and what is how we'll do that we'll see in later. But you can understand that these apart from these standard header files, we can have our own defined header files that will the first serve the purpose same as the system header files. Definitely they will contain the definitions of various functions. Here they are user defined. When we talk about defining our own header files, we are talking about user defined functions, and their definition will contain by that header file that will store in that way.
So that is what the purpose of these header files. So we have, two type of syntax are there. Whatever example I have given here, we are using, this angular bracket start, angular bracket close. There is one other way we can use these uh, header files in this inverted commas. An important thing is both should point in the same direction. This is basically for our own header files. We have to give the path of that uh, path of the file. Otherwise, we need to save it into the directory where we have saved our program. So normally we use hash includes angular bracket open, angular bracket close. Inside that we are writing the header files, that is system header files, just like stdio.h. We can write in that way also for that header files. Like stdio.h we can write in double inverted comma also. But for our user defined header file, we have to use this convention. So this can be used for these type of system defined header files, but for our user defined header files, we have to use this convention. And this hash include directive works by directing the C processor to scan the specific file as input before continuing with the rest of the current source file. That's why we called it कि link करेगा हमारे ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है. बिफोर प्रोसेसिंग द कोड हम क्या करेंगे, ये लिंक करेंगे इससे हमारे कोड को. So that is what the second part. So we have discussed document section, we have discussed the link section. Now move to definition section. This definition section defines all symbolic constant such as using the defined directive. So you can see again this example, we have defined max 100. This is basically the definition section. We are using a constant and putting its value is 100. We usually do this for those kind of defining such kind of constant that we'll use in the program, and in spite of changing it so many places, we can change it from here. So this section is used for defining such type of constant, even for the macros. And macros we'll see in later. These are the basically the small functions with some specific tasks that we can also define over here. So this section is for defining for these type of constant and even macros definition that we'll see later. Again, we have now started the main section. And the same way here, another thing is this section, you can say we have separated this by global declaration section. You have to understand this word global and local. Anybody can tell me the meaning of this global and local declaration? Global declaration means what? Anybody? Anybody? सर इन्हें हम थ्रू आउट प्रोग्राम कहीं भी यूज कर हाँ. सकते हैं, और जो लोकल होते हैं वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक के बाद मतलब यूज होना बंद So हो बस, जाते हैं. द तो ये टर्मिनेटेड. एक्चुअली यहाँ से हमको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, वो होगा स्कोप. जैसे अभी आपने बोला ना कि ये मैंने कहा ग्लोबल, ये ग्लोबल लोकल ये सब क्या है, स्कोप है. व्हेन वी टॉक अबाउट स्कोप, वी जनरली टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ द वेरिएबल, स्कोप ऑफ हियर वी इन दिस सेक्शन, if anything we are defining before main, that will be it's something that can be used inside throughout the program. It means what happened, जब हम functions अभी आगे पढ़ेंगे और हम देखेंगे तो there are various sections, various part, various functions. Those variables, those are declared inside the functions or even in the main, that cannot be used with the other functions we are talking about. So these sections, when we declare variable over this globally, it means that can be used throughout the program. So its scope is global, means it can be used in every in all the sections or all the part of the program. When we declare variables inside in the functions, their scope is limited to that. So here, whatever we declare like integer x100, this x will be known to throughout the program.
Might be possible here inside the integer main. Here also we can write x and we can put some values over here, but that x, scope of this variable will be within this main only. So we have to understand this. So this global declaration section means the scope of these declaration will be throughout the program. And this section also contain the declaration of user defined function. Declaration of user defined function. तो ये void add जो है, anything is start from open bracket close bracket will consider as function, just like see here. अभी हमने variables की कल बात करी थी, तो आप यहाँ देखो a is equals to integer a 100, ये हम अभी आज उसके बाद समझेंगे चीजें. So this is basically variable, and here you can see void add open bracket close bracket. So this is a function. So here we talk about, this section talks about declaration. And global declaration means this add function can be used any part of the main. It's not like that एक section में हम use कर पा रहे हैं और दूसरे में नहीं. So this section was the definition section and global declaration section. Yes. सर, जैसे हमने कोई वेरिएबल ग्लोबली भी डिक्लेयर किया है और लोकली भी डिक्लेयर किया है, सेम वेरिएबल, अगर जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो प्रेफरेंस कैसे मिलेगी? सबसे पहले अगर हमने उसको यूज करना होगा तो सबसे पहले प्रेफरेंस कैसे मिलेगी? जैसे हमें एक्स की वैल्यू प्रिंट करवानी थी, समझ लीजिए, तो वो ग्लोबली वाला वेरिएबल यूज होगा या फिर जो उसमें लोकल हमने पहले वैल्यू डाली होगी वो लोकल यूज होगा उसमें? ग्लोबल डालेंगे और लोकल डालेंगे. हाँ, दोनों में एक्स ही लिया है हमने वेरिएबल, और हमें अब एक्स की वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो वो ग्लोबल वाले वैल्यू लेगा या फिर लोकल वाले वैल्यू लेगा? So inside the main it will take local value, but x, we'll see it while implementing this. We'll see this point. Okay. So अभी क्योंकि हम तो वेरिएबल पे भी पहुंचे, then we'll see. मैंने तो स्कोप आपको इसलिए बता दिया कि अभी चीजें हैं, है ना. Let me see. तो अभी हम सेक्शंस की बात कर रहे हैं. अभी वेरिएबल और इसको अपन दोबारा इस पे जाएंगे आज की क्लास में, मे बी एट द एंड वील रीच दैट. अभी हम अगला सेक्शन क्या है हमारा, ग्लोबल हो गया. अब हम आ रहे हैं, हमने क्या कवर कर लिया, वी हैव रीच टू लिंक सेक्शन, देन हेडर फाइल वी हैव डिस्कस, वी हैव रीच टू डेफिनेशन सेक्शन, देन ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, है ना. सो हमने डिस्कस कर लिया, देयर आर सम वेरिएबल दैट आर यूज्ड इन मोर देन वन फंक्शन. सच वेरिएबल्स आर कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल्स एंड आर डिक्लेयर इन द ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन. ये सब क्या होगा, आउटसाइड द ऑल द फंक्शन, मतलब मेन से पहले. दिस सेक्शन आल्सो डिक्लेयर ऑल द यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये हमने डिस्कस कर लिया. नाउ मेन फंक्शन. अब हम आ जाए हमारा मेन, ये हमारा एग्जीक्यूटेबल पार्ट है. दिस इज अवर the part where the execution has been done. Whatever we'll written this main function, that will be displayed. Other thing is like we are declaring function, we are declaring constant and all, but every execution will be done inside this. So every C program must have one main function. This section contain two part, declaration part and execution part. ये डिक्लेरेशन बिफोर यूजिंग इट वी हैव टू डिक्लेयर, ये सारे रूल्स अपन देख लेंगे. अभी हम फंक्शंस, हम जैसे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं आज, तो डिक्लेरेशन पार्ट में हमें सारे वेरिएबल जो भी होंगे, है ना, जो यूज करेंगे हम एग्जीक्यूटेबल पार्ट में, वो हमें डिक्लेयर करना होंगे. एग्जीक्यूटेबल पार्ट का मतलब क्या होगा, देयर इज वन स्टेटमेंट इन एग्जीक्यूटेबल पार्ट, दीज टू पार्ट्स मस्ट अपीयर बिटवीन द ऑपरेटिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट. ये भी हम देख लेते हैं. यहाँ पर मेन देखें, यहाँ मेन क्या है, ये मेन फंक्शन विट यहाँ से कंपाइलर को जैसे ही मेन दिखता है वो मान लेता है कि इसके ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के बीच में जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट करना है उसको. सो बाय सीइंग मेन, कंपाइलर it is compiler just see open bracket and close bracket and whatever written in between these two it will execute. हम ये जो 8 फंक्शन यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं ना ग्लोबल सेक्शन में, वो भी हम अगर यहाँ कॉल करेंगे तभी एग्जीक्यूट होगा. सो दिस प्रोग्राम, दिस पोर्शन, दिस इज फॉर ग्लोबली डिक्लेयर फंक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट, और this integer x kind of thing. But the point is we have to call it over here. So execution part should be here.
and some of the local variable and other things you will declare over here also. So this main part will contain two things: declaration part and execution part. So main, from open bracket and close bracket, whatever written will be executed by the compiler. It means by seeing main, compiler will find that now the executable part will be there in this within this open bracket and close bracket, and it will be executed by the compiler. तो मेन हमारा वो जो एग्जीक्यूटेबल पार्ट है हम वो लिखते हैं. अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, जिस ऑर्डर में हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं उसी ऑर्डर में हम क्या करें, लिखते चले जाएं. डेफिनेटली अगर एक फंक्शन मैं चाहता हूं कि इनपुट फंक्शन कोई सा बनाया है, तो वो पहले कॉल करूंगा तभी तो वो इनपुट लेगा. मान लो मैं दो नंबर को ऐड करना चाहता हूं, तो मुझे ए की वैल्यू पहले, मान लीजिए दो वेरिएबल है ए एंड बी, और उनकी वैल्यूज को ऐड कर रहा हूँ सी में और वो डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा. जिस ऑर्डर में मैं करूंगा उसी ऑर्डर में कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा. अब मैं पहले लिख दूं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और फिर ए और बी की वैल्यू दूं, तो ऐसा नहीं होगा. इट मींस जिस ऑर्डर में हम एग्जीक्यूशन चाहते हैं उसी ऑर्डर में हमको क्या होगा, मेन के अंदर हमारा कोड लिखना होगा. तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट होगा. तो यहाँ पे हमने क्या कहा, दो पार्ट होंगे. डिक्लेरेशन पार्ट, दिस पार्ट डिक्लेयर ऑल द वेरिएबल जो यूज होंगे एग्जीक्यूटेबल पार्ट में. और एग्जीक्यूटेबल पार्ट क्या होगा, जहां पे हम प्रोग्राम ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के बीच में है और हम यहाँ पे लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस देंगे जो हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं. जस्ट लाइक जो मैंने कहा कि अगर हमें दो नंबर को ऐड करना है, तो विल स्टार्ट फ्रॉम डिक्लेयरिंग दीज वेरिएबल्स, देन विल इनिशियलाइज दीज वैल्यूज और टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, देन वी परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन जो हम चाहते हैं और उसको किसी और वेरिएबल में स्टोर करेंगे. और अगर हम उसे डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम जो जिस सीक्वेंस में हम चाहते हैं दैट विल बी परफॉर्म हियर इन द मेन. तो ये मेन हमारा वो पार्ट है एग्जीक्यूटेबल पार्ट. तो यहाँ पे हमने कहा डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूटेबल पार्ट. अब इसमें हम जो हमने फंक्शंस ऊपर डिक्लेयर भी करे हैं वो भी हम कॉल कर लेंगे, है ना. कॉल करेंगे फंक्शन के साथ, तीन चीजें होती हैं, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉलिंग, है ना. ये सब हम धीरे धीरे देखते जाएंगे, इसलिए जैसे एक एब्स्ट्रैक्ट वे में अभी हम एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम का, क्योंकि अभी तो हर चीज हमको बिल्कुल स्क्रैच से समझनी है. तो वी कांट से कि फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग क्या है डायरेक्टली, ठीक है. तो हम अभी सिस्टम, हमने यूजर डिफाइन की बात ही नहीं कर रहे हैं. हालांकि हमने इस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में समझने के लिए ये बता दिया कि कुछ फंक्शंस जैसे लाइब्रेरी फंक्शन है, जैसे हमने कहा प्रिंटफ, जिनका प्री डिफाइंड वो है और हमें उसे डिफाइन नहीं करना, और हम सीधे क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं. ना डिक्लेयर करना है ना डिफाइन करना है, ये होते हैं हमारे लाइब्रेरी फंक्शन, जस्ट लाइक प्रिंटफ. और ये वॉइड हेड हमने ग्लोबली डिक्लेयर करा था, ये यूजर डिफाइन फंक्शन था. तो हमने डिक्लेयर करा था इस पार्ट में. आउटसाइड द मेन हम उसके क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे. तो आउटसाइड द मेन हम डिफाइन करेंगे. तो ये जो आउटसाइड द मेन पार्ट है दैट इज बेसिकली द यूजर डिफाइन फंक्शन सेक्शन है, जहां पे हम जो हमने फंक्शंस डिक्लेयर करे हैं उनकी डेफिनेशन लिखते हैं. एंड इवन दैट कैन बी राइट at the time of declaration also we can define that, but the best way is like this. तो अब जो पर्पस है इस स्ट्रक्चर से समझने का क्या है, कि अगर आपको कोई चीज, कोई प्रोग्राम बनाने को दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम दी जाती है, तो हमें उसको इस तरह से स्प्लिट करके समझना है कि अगर इनपुट है, हम हर उसको एक मॉड्यूल, जैसे हमने फंक्शंस की बात करी, मॉड्यूल्स में ब्रेक करने की कोशिश करें. कि अगर हम इनपुट ले रहे हैं तो उसे हम इनपुट का एक फंक्शन बना दें, तो हमें पहले ही क्लियर हो जाए प्रॉब्लम को समझने के बाद. इसलिए वो जो हमारा पार्ट था एल्गोरिथम वाला, हम समझ जाएं कि क्या स्टेप्स आएंगी और कैसे होंगी. तो उसको हम मॉड्यूलर पार्ट में डिवाइड करने, मॉड्यूलर अप्रोच यूज करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारी फॉर लार्जर प्रॉब्लम हमारी प्रोग्रामिंग आसान हो जाती है. तो अभी हमने अब डिस्कस किया मेन. नाउ दिस, यस सर, जो मेन फंक्शन होता है उसे हम एज ए इंटीजर ही क्यों लेते हैं, वॉइड नहीं ले सकते उसे? यस ले सकते हैं. इस प्रोग्राम में वॉइड लिया हुआ है, इंटीजर लिया हुआ है, इसे हम वॉइड ले सकते हैं. ये क्या होता है, फंक्शन के पहले जो लिखा है वो उसका रिटर्न टाइप होता है, किस टाइप की वैल्यू वो रिटर्न करेगा. अगर हम void ले रहे हैं तो it means there is no need of returning any value. So if you are not writing anything, it is already void. If we are writing integer, it means the return type. Before function, whatever we return, it is just like this. This main function is library function. Just see above this. We have defined add, but what we have written before add, it is void. What we have written, it is void.
It is basically known as prototyping. ये declaration जो था, that talks about which type of value it is going to return. Then we have to define the parameters also, which type of value we are going to input. This entire process is known as function prototyping. कौन सी वैल्यू, कितनी वैल्यू लेगा, किस तरह की वैल्यू लेगा, कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा. That is what something is function prototyping. But in case of main, we are not defining this, we are not declaring it. It's a system, it's a library function. So here before that, what we have to do, you might return certain values. For that, you have to put this return type integer. Otherwise, by default, it is void. So before that, if you are writing integer, it's not compulsory that you will declare it integer. You can use it as a void also. ओके सर. Clear है? Clear? यस सर. Okay. दिस सब प्रोग्राम सेक्शन, जिसको हमने अभी क्या बोला था, ये जो हमने नीचे लिख दिया था ना, फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन, दिस इज बेसिकली नोन एज सब प्रोग्राम सेक्शन. इफ अ प्रोग्राम इज अ मल्टी फंक्शन प्रोग्राम, मींस लाइक मेन में हमने ऊपर हमने एक इधर पे इस एग्जांपल में हमने क्या कर रखा था, हमने इस एग्जांपल में ग्लोबल डिक्लेरेशन में हमने क्या करा था, वॉइड एड एक फंक्शन क्या करा था, डिक्लेयर कर रखा था. ये क्या था, डिक्लेरेशन. ये क्या था, डिक्लेरेशन. अब एक इंपॉर्टेंट बात जो अभी ऊपर छोड़ दी थी, जब मैंने डिफाइन मैक्स 100 करा था, देखो यहाँ सेमीकोलन नहीं यूज किया था. तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम इस तरह से कांस्टेंट डिफाइन करते हैं तो वी नीड नॉट टू रिक्वायर्ड सेमीकोलन. अदरवाइज ये अभी रूल्स बताऊंगा, ये सारे रूल्स आपको याद रखना है. वैसे तो आप गड़बड़ करोगे तो जब कंपाइल करोगे तो एरर मिल ही जाएगी. यू मस्ट एबल टू डिबग दैट कि ये एरर किस बात की आ रही है. हमने सेमीकोलन कई बार हम भूल जाते हैं, कई बार हम अननेसेसरी ऐड कर देते हैं. तो डिक्लेरेशन पार्ट में सेमीकोलन आएगा. डेफिनेशन में आप देखेंगे कहाँ एंड में आएगा कहाँ नहीं आएगा, वो ग्रेजुअली वन बाय वन जब कॉन्सेप्ट देखते जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा. यहाँ देख लो, डिफाइन मैक्स के आगे सेमीकोलन नहीं है, पर डिक्लेयर जब करा था वॉइड एड तो उसके आगे सेमीकोलन है. ग्लोबली डिक्लेयर करा था इंटीजर एक्स, उसके आगे सेमीकोलन है. ये अभी सारे रूल्स बताऊंगा. एवरी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट मस्ट बी एंडेड विद सेमीकोलन, सो दैट विल सी. तो ये जो सब प्रोग्राम सेक्शन है वो वही है जो मैं डिस्कस कर रहा था, ये फंक्शन डेफिनेशन पार्ट. तो यहाँ फिर हमने क्या लिखा है, if a program is a multi-function program, that the sub-program section contains all user-defined functions that are called in main. User-defined function are generally placed immediately after main function, है ना. Although they may appear in any order. ये एक बात और समझ लो, ये डेफिनेशन जो फंक्शन सब प्रोग्राम पार्ट है, आपने मान लो यहाँ 5 फंक्शन डिक्लेयर करे, आप किसी भी ऑर्डर में यहाँ डिफाइन करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा डेफिनेशन पार्ट में. ठीक है. तो इट्स नॉट लाइक हमने मान लो फंक्शन 1 फंक्शन 2 फंक्शन 5 करा, तो यू मे स्टार्ट फ्रॉम डिफाइनिंग फंक्शन 5 एंड सो ऑन. तो आउटसाइड द मेन ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा. होगा ये कि जब फंक्शन कॉल आएगा ना, इसके अंदर मान लो मैंने कॉल किया होता वॉइड एड विद सम पैरामीटर्स, या तो अभी मैंने उसकी डेफिनेशन में सिर्फ एक डिस्प्ले करा है. तो अगर मैंने उसे कॉल करा होता है ना यहाँ पे, तो कंट्रोल स्विच हो जाता उसकी डेफिनेशन पे. तो इट इज लाइक दैट. तो ये था सब सेक्शन प्रोग्राम, सब प्रोग्राम सेक्शन जो यूजर डिफाइन सेक्शन था हमारा. ठीक है. तो मैंने आपसे कहा था कुछ सेक्शन कंपलसरी हैं, मैंडेटरी हैं, और कुछ सेक्शंस क्या हैं, ऑप्शनल हैं. तो आप कमेंट नहीं लिख रहे हो तो चल जाएगा. आप यूजर डिफाइन फंक्शन नहीं यूज कर रहे हो, आपका उसी से काम चल रहा है तो चल जाएगा. पर मेन इज मस्ट. मेन इज मस्ट. So these are the other examples similar to that. Here you can see in documentation part, I've just written sample program, author name, date, description of the program is missing. Here you can also see is defined length. Here declare some other variable also. It is global declaration basically. It is defining constant. Maximum array length is 20. This is function. How we have defined this? This is the return type. Basically, you can see whosoever is asked me that question, you can see this function prototyping over here. यहाँ देख सकते हो add number after float है. ये float क्या है ना, हमारा डेटा टाइप है, और इसमें देख रहे हैं float है, float भी ये पास हो रहा है. और अभी हम सिर्फ बाकी लॉजिक पे ना जाए, अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम देख रहे हैं. तो मैंने आपको बताया था ये जो अभी हाईलाइटेड है ये डॉक्यूमेंट सेक्शन है. दिस हाईलाइटेड पार्ट इज डॉक्यूमेंट सेक्शन. ठीक है. दिस हाईलाइटेड पार्ट इज लिंक सेक्शन. दैट इज व्हाट द हेडर फाइल इज.
This define max array length is equals to 20 is definition section. This integer max input length is equals max underscore input underscore length is equals to 15. ये हमें रूल समझना है, ये वेरिएबल नेम है. अभी हम जस्ट इसके बाद उसी पे स्विच करेंगे. How we have written this? So there is a rule. There are some rules for declaring variable name and other things. So this is what the global declaration section. Now this is our main function. It may be integer or it may be return type may be integer or return type may be void. And this is last section is subprogram section. Here you can see we are defining the float add numbers that we have declared in the global declaration section. Okay, so you can see the program. What I was telling you can see here. मेरा कहना था कि for your normal programming also you should start writing your name, date, and description. Like for this program, I have written write a program to print hello world on the screen. For that, I have written information in our document section. You can see we have used this comment backslash followed by star followed by backslash. This entire block will be comment line now. So compiler will not read it. It will not consider for execution. Then this is link section, include stdio.h, include conio.h. अब now in this program कोई ग्लोबल डिक्लेरेशन नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, यूजर डिफाइन फंक्शन नहीं है तो डिक्लेयर नहीं है फंक्शन तो उसकी डेफिनेशन भी नहीं होगी. तो इट्स अ सिंपल प्रोग्राम. यहाँ पे मैंने क्या लिया, रिटर्न टाइप वॉइड लिया है. सो व्हेन विल एग्जीक्यूट दिस विल गेट द आउटपुट एज हेलो वर्ल्ड. अगेन ये जो बैकस्लैश एन है ये हमारी एस्केप सीक्वेंसेस होती हैं, इसे हम आगे देख लेंगे. प्रिंटएफ क्या है बेसिकली? प्रिंटएफ अगेन एक लाइब्रेरी फंक्शन है जिसका टास्क है आउटपुट स्क्रीन पे क्या करना, जो भी ये मैसेज है उसको स्क्रीन पे प्रिंट करना. गेट सी एच अगेन एक लाइब्रेरी फंक्शन है, हमने कहीं डिफाइन नहीं करे, हमने डायरेक्टली यूज करे. इसका काम है हमारी कंसोल स्क्रीन को होल्ड करना. अगर मैंने गेट सी एच नहीं यूज करूंगा तो ये प्रोग्राम मुझे आउटपुट में जाके इसका आउटपुट देखना होगा क्योंकि स्क्रीन होल्ड नहीं होगी. गेट सी एच या गेट सी एच ई यूज करते हैं हम फॉर होल्डिंग द स्क्रीन सो दैट वी विल एबल टू सी द आउटपुट ऑन द स्क्रीन. नाउ कम टू द कमेंट, है ना. हम जब भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट लाइक हमने ये कमेंट लाइन डॉक्यूमेंटेशन के लिए बोली, पर उसके बावजूद आपको ये कमेंट लाइन थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज करना चाहिए, बिकॉज यही हमारे प्रोग्राम की क्या करता है, रीडेबिलिटी को बढ़ा देता है. कमेंट्स आर अ वे ऑफ एक्सप्लेनिंग व्हाट मेक्स अ प्रोग्राम. कंपाइलर इसे इग्नोर करेगा पर ये हमारे लिए यूजफुल होगा हमेशा. और इट्स नॉट अबाउट सी, even it's for anything you are doing, you should start writing these things in comment line. जो हमारे लिए कई बार होती है हम इस लॉजिक से कर रहे हैं या हमने कोई ऐसी चीज कर दी है, क्योंकि अभी बहुत सिंपल प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं. व्हेन इट कम्स टू वेरी लार्जर कोड, तो वहां पर तो हमको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पर्टिकुलर सेक्शन में हम कमेंट लाइन करके उसमें लिख दें ये सेक्शन इसके लिए है, या इसमें ये पर्टिकुलर इसमें हमने ये चीज करी जो नहीं करनी थी, XYZ व्हाटएवर, कोई लॉजिक ऐसा लिया दूसरे तरीके से ले सकते हैं 1 2 3. तो ये कमेंट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जब आप बहुत बड़े प्रोग्राम्स बनाओगे तब आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझोगे. और बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, इट विल बी हेल्पफुल फॉर डेवलपर टू अंडरस्टैंड द एक्जिस्टिंग कोड इन फ्यूचर इजीली. कई बार क्या होता है, एक बहुत गंदी आदत होती है स्टूडेंट्स की, आप लोगों में एक चीज क्या होती है, आप नॉमेनक्लेचर भी बहुत अजीब से करते हो. तो नॉमेनक्लेचर शुड बी वेरी क्लोज टू द प्रॉब्लम व्हाट यू आर डीलिंग. Like you are making a program for simple interest calculation, so why not for principal you should take either entire that name principal or at least it is P. For rate you should take R. For interest you should take I. For time you should take T. Even हमें शॉर्ट में नाम लेना चाहिए वेरिएबल्स का, वही जिनको हम स्टोर करने की बात कर रहे हैं. कम से कम 10-20% स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वी हैव ऑब्जर्व इट इन लैब फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स, वो ABCD XYZ PQRST. दिस इज फॉर स्मॉलर प्रोग्राम इट्स ओके, फॉर लार्जर प्रोग्राम इट्स क्रिएट ट्रबल्स फॉर अस. हम उसको आगे नहीं रीड कर पाते. जब मान लो 20 और 30 और वेरिएबल आप यूज कर रहे हो प्रोग्राम के अंदर और आप नॉमेनक्लेचर ABCD EFGH ले रहे हो,
तो थोड़ी देर बाद हम ही समझना, आप एज ए कोडर यू नो नॉट अंडरस्टैंड कि चीजें क्या है. Just like I am talking about the simple program of calculating simple interest. Why not for principal? You can take at least print. In short, you can write like this. For interest, keywords we cannot use. So interest, at least starting from that words and not go with longer name. At least it should convey the message. So that approach from the day one you should adopt. That nomenclature should be very proper. It should not like that. I have seen people using very random variable names like A B C D E F G kind of thing, or X Y Z like thing. These things should not be done in your code. It should be properly commented. So from day one you adopt these kind of thing. It should be indenting should be very proper. Indenting should be very proper, because in C it will not matter a lot, but because if you see Python and other languages, you also get the indentation error there. But here again the readability, and again it will create the differentiation in among two students also. By seeing the code we can see that this is the what the professional way is. So these few things you must understand. For writing fast logic it's okay, but when going with execution, you should be systematized. So that's why I am very first day I am discussing these things, that it should be properly commented. You should keep track, or always give attention to indentation in proper way, so that these curly brackets start and close. That will be able to we will able to trace or debug the error when we write 1,000 line of code. In that, if you miss something there, or if you put wrong parenthesis, so it will be easier for you to track that. So for debugging becomes little easier for us. So that's all about what these command line, these stdio.h is basically, it's a hash के साथ जो भी include आया, it's a preprocess command that notify the compiler to include the header file in the program before compiling the source code, so that जो definitions हम use कर रहे हैं ना, जो हम user define, हम जो library function use कर रहे हैं, उसकी definition आ जाए. तो ये that's all from my side for basic structure of a C program. So अब मैं move करूंगा वापस जो हम कल कर रहे थे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल क्या होंगे एंड ऑल, सो दैट इन फ्यू क्लासेस वी विल एबल टू स्टार्ट प्रॉपर कोडिंग. तो ये जो आज मैंने अभी बताया, अभी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम समझ में आया? दोज यू हैव नॉट गो इनटू द प्रोग्रामिंग येट, उनको प्रॉपर समझ में आया? साहिल को समझ में आई मेरी बातें? Okay, so in last class, so today we have discussed what? We have discussed the basic structure of a C program. In last class we have started basically these things: character set, constant, variables, and keywords. We have just discussed the constant. Okay, so if we talk about C constant, so C constants are divided into two categories. One is primary constant and second one is secondary constants. So primary constant की अगर हम बात करेंगे तो integer, real और character. These are the primary constants that we use, like integer, float, and character basically in data as a data type. And secondary constants are array, pointer, structure, union, etc. Okay. So now we have to see some of the rule for constructing these what constants. Like if we talk about integer, integer में हम बात करें तो क्या points होंगे? Integer must have at least one digit. इसमें कोई डेसिमल पार्ट नहीं हो इंटीजर में.
ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हमने कोई साइन इसमें नहीं लगाया है नेगेटिव, तो वी विल अज्यूम दैट इट इज पॉजिटिव। इंटीजर कांस्टेंट में कोई कॉमा, ब्लैंक, ये सब हम नहीं यूज कर पाएंगे, है ना। और जो वैल्यू होगी, अलाउबल रेंज है, वो है -327682 +32767। ये इंपॉर्टेंट है। और ये वैल्यू जो होती है, ये हमारी वैल्यू, और जो रेंज है या साइज है, ये डिपेंड करेगी, ये हमारे कंपाइलर, हार्डवेयर, सब पे डिपेंड करेगी। सो दैट पॉइंट वील सी कि जब डिफरेंस आने की बात आएगी। और इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें किस टाइप का वेरिएबल किस प्रॉब्लम के लिए चूज करना है, ये हमें समझ में आना चाहिए। अगर हम मॉडुलस ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, हम नंबर को अ, हम नंबर को एक डेसिमल कम करने की बात कर रहे हैं, तो हम रिजल्ट को ट्रंकेट करेंगे, हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए कि फ्लोट वैल्यू चाहिए। बाय दीज अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग विल डिसाइड कि किस टाइप के हमको वेरिएबल और कांस्टेंट डिक्लेयर करने हैं फॉर विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कि हम किस कौन सी वैल्यू, अगर हमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू चाहिए तो वो डिक्लेयर होना चाहिए एज अ रियल। अदरवाइज अगर हमें फिक्स वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज की बात नहीं कर रहे हैं, तो वो इट शुड बी डिक्लेयर एज इंटीजर। और समटाइम्स वी रिक्वायर्ड सम कैरेक्टर्स, सो इन दैट केस इट शुड बी chosen accordingly. So from here we will start from the next class for declaring these things. What are the keywords, how to declare ये nomenclature, variable names, और इन सब के rules क्या होंगे, है ना। That will cover in next class now. Okay. So anybody wants to say something, or I conclude the class. Okay. तो